In chapter 8, in history chapter 8, we have finished this chapter. Now today we start our exercises. Here first exercise is, what social ideas did the following people support? Here are the different leaders. What their ideas, social ideas for the people support. Here start with the exercises. First page 121. Ram Mohan Roy. Ram Mohan Roy. These people supported the following ideas. Spread of education among women. Secondly, Dayanand Saraswati. You can also make the table. Dayanand Saraswati, widow remarriage. Veera Salingam Pantalu. Veera Salingam Pantlu Pantululu. Caste equality and justice. Caste equality and justice. 4. Jyotirao Phule. Jyotirao Phule. Abolition of child marriage. Abolition of child marriage. Pandita Ramabai. Pandita Ramabai. Social equality for untouchables. Social equality for untouchables. Then you can find out Periyar, Mumtaz Ali and Ishwar Chandra Vidyasagar. Rajaram Mohan Rai spread the education among the women. Dayanand Saraswati, widow remarriage. Veera Salingam Pantulu, caste equality and justice. Jyotirao Phule, abolition of child marriage. Pandita Ramabai, social equality for untouchables. Now, second, true or false?
which we will see in the notebook. Write down notebook. Read first. When the British captured Bengal, they framed many new laws to regulate the rules regarding marriage, adoption, inheritance of property, etc. तो अगेन रीड. व्हेन द ब्रिटिश कैप्चर्ड बंगाल, जब ब्रिटिश ने बंगाल को कैप्चर कर दिया, दे फ्रेम मैनी न्यू लॉज टू रेगुलेट द रूल्स रिगार्डिंग मैरिज, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सेट्रा. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. यस, ब्रिटिश क्रिटिसाइज करते थे हमारे कस्टम्स इंडिया के, जो हमारे रूल्स थे रिगार्डिंग द मैरिज, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सेट्रा. तो ट्रू. Social reformers had to discard the ancient text in order to argue for reform in social practices. False. Social reformer ऐसा नहीं करते थे. Ancient text in order to argue for reform in social practices. False. Reformers got full support from all sections of the people of the country. False. Social reformer को कोई सपोर्ट नहीं मिलता था all sections of the people of the country. The reformers got full support. No, they did not get full support from all sections of the people of the country. The Child Marriage Restraint Act was passed in 1829. False. 1929. 1929 में the Child Marriage Restraint Law was passed in 1929. After that, we will start our question answer. Third, how did the knowledge of ancient text help the reformers promote new laws? 1. In that, how did the knowledge of ancient text help the reformers promote new laws? Write down. How did the knowledge of ancient text help the reformers promote new laws? The reformers tried to convince people that widow burning, caste distinctions, child marriage, etc. had no sanction in ancient texts. Their knowledge, sorry, you can make puns. They are social reformers' knowledge of ancient text gave them immense confidence and moral support which they utilize in promoting new laws. Last point, they did not get feared when people raised voice against
the reforms they had brought. How did the knowledge of ancient texts help the reformers promote new laws? The reformers tried to convince people that widow burning, caste distinctions, child marriage, etc. had no sanction in Asian texts. ऐसा कोई भी जो विडो को बर्निंग करना है, मतलब विधवा जो होती है वो अपने हस्बैंड की चिता पर चलने का, कास्ट डिस्टिंक्शन कोई भी अपर कास्ट लोअर कास्ट नहीं, ऑल आर इक्वल, चाइल्ड मैरिज, अर्ली एज में चाइल्ड मैरिज, ऐसा कोई भी जो कस्टम था वो टाइम पर, वो कोई भी एशियन टेक्स्ट में सैंक्शन नहीं है, वहाँ कोई बताया नहीं है। ऐसा रिफॉर्मर कन्विंस करते थे पीपल को कि ये सब चीजें एशियन टेक्स्ट में कहीं पे भी बताई नहीं है, ऐसा कोई कस्टम नहीं है। Their knowledge of Asian texts gave them immense confidence and moral support, which they utilized in promoting new laws. उनको जो न्यू लॉज प्रमोट करते थे तो उनको एशियन टेक्स्ट में से जो नॉलेज मिला, उन्होंने कॉन्फिडेंस आया, उन्होंने मोरल सपोर्ट करे और वो प्रमोटिंग द न्यू लॉज. They did not get feared when people raised voice against the reforms they had brought. और जो भी ये रिफॉर्मर थे, उन्होंने जो भी रिफॉर्म करा, जो चेंज करा, जो सुधार करा, उन्होंने जो सुधार लाया, उनके वो डरते नहीं थे बिल्कुल भी. डिड नॉट फेयर बिकॉज दे आर द रिफॉर्मर्स. दे रेज्ड, उनके सामने कोई भी अगेंस्ट होता था, उनके सामने कोई आवाज उठाता था तो दे डिड नॉट गेट फियर. वो अपने सुधार लाने के सामने कोई भी चिंता नहीं और फियर नहीं करते थे. तो क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश होता है कि उनका जो नॉलेज था, हाउ डिड द नॉलेज ऑफ एशियन टेक्स्ट हेल्प, तो उनको हेल्प मिली रिफॉर्मर्स प्रमोट द न्यू लॉज, तो वो न्यू लॉज प्रमोट कर सके. विद दिस आफ्टर दैट वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू वेरी मच.